Good morning, good morning, good morning, students. I hope everyone is doing good. Now, today we are going to start with second chapter after accounting standards and ESOP. That is advanced accounts ka second chapter, buyback of securities and equity shares with differential rights. I hope, friends, you have started with employee stock option plan and you have completed all study material questions. If you have any difficulty, you can ask me today itself so that I will solve that question. If you have any difficulty in question which I have not solved. In employee stock option plan, what you are going to see. So employee stock, what you have seen is number one, employee compensation expenses, account debit. So first one, it is a grant date. Grant date means what? Where shares are kept before or option is given to the employee. Second one, vesting period. Vesting period is that key conditional period you have to fulfill. Employee has to fulfill. So remember, service condition. So employee should be in the employment for next 3 years. It's a service condition. Or second one, if it is a performance based condition, that is the market value or non-market value. So he should achieve some targets. Vesting period is not fixed under performance condition and vesting period is fixed under service condition. Friends, if grant date, vesting period ends, then exercise period starts. And if it is in the same period, then beta entry will be very simple. Bank account debit, employee compensation expense account debit to equity share capital to security premium. But friends, suppose if vesting period is different from the exercise period, you will pass entry. That table you will prepare year competition, amount already, cumulative amount to be transferred to P&L, then amount already transferred to P&L, and what is the last column? This is the amount column. Friends, remember, in case of buyback bolo ESOP case mein employee compensation expenses account debit to is outstanding will be the entry. Suppose after that, second entry will be P&L account debit to employee compensation expenses. But suppose in employee stock option, you are getting the negative figure, you will write the answer employee stock option outstanding account debit to general reserve. Normally, employee stock option outstanding you will show under the head reserves and surplus. And then last entry will be bank account debit, so outstanding account debit to equity share capital to security premium. And if there is a balance in this outstanding account, you will pass the entry so outstanding account debit to general reserve. Friends, it is really very simple. I hope you won't make mistakes in this chapter. Employee stock option is one of the easiest chapter of advanced accounts. Now we are moving to next chapter, that is a buyback of securities and equity shares with differential voting rights. Okay, friends. तो अब तक आपको सबको सुप्रभात बेटा. Yes, very good. तो good morning किरण जी, दर्शन जी, सुनील कुमार, हर्षित, कोमल and Manisha. I think this is my second last session of advanced accounts, and after that I am going to start with advanced accounts nahi hoga. I think foundation and inter key batches. Yesterday foundation result was there. Many students they failed foundation exam. Okay, and result was very bad. I will say 25% ही लगा है. तो आप सबको मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आफ्टर रिजल्ट स्टूडेंट्स आर गेटिंग नर्वस. Instead of that feeling, if you give your 100% for your advanced accounts, ITSM, ESSM, then auditing, तो ये याद रखो, you are going to pass. Okay, so प्लीज मैं पहले ही बोल देता हूँ, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है और उसके बाद आपको बहुत बुरा लगेगा. इससे अच्छा डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, यू विल गेट गुड मार्क्स. चलिए. So good morning, Divya. Yes, beta. Yes, good morning to all of you. Buyback options. Before starting any chapter, first ask to yourself, why this chapter? Buyback of securities and equity shares with differential rights. Friends, buyback. Buyback means on the asset side. What is the meaning of buyback? First thing.
हाँ जी, your share capital is going to reduce. Okay, so you can write on in the 100 pages book face value. Your share capital is going to reduce. Buyback of securities means you are taking back your accounting share capital. You will strike off the name of that person from the shareholders list and you are giving offer to the shareholders कि buyback के लिए आप आ जाइए. शेयर कैपिटल आपका नीचे जाएगा. बैंक बैलेंस आपका इश्यू प्राइस से कंप्लीट रिडम्पशन वैल्यू बोल सकते हो या बायबैक प्राइस. बायबैक प्राइस से आपका डाउन होएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और जो ऊपर का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से माइनस हो सकता है और वो नहीं अवेलेबल होगा तो P&L में से. सर रिडम्पशन याद है? रिडम्पशन सेम सीआरआर क्रिएट करना है और रिडम्पशन भी करना है. सो दिस इज सिमिलर टू यूर विच चैप्टर बेटा? यस, आपका चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में इतना ही डिफरेंस है कि बायबैक इज ऑफ इक्विटी शेयर्स and redemption is of preference shares. But here you have to maintain one test and here there is a criteria how much maximum shares you can be bought back. तो इधर एक criteria है और वो criteria आपको fulfill करना है. वो criteria आपको fulfill करना है, इतना याद रखिए. So buyback is very simple, बहुत simple है. बिल्कुल भी इसको ऑप्शन में मत छोड़िए. ये टॉपिक आपको यही सिखाता है कि बायबैक में सॉल्विंग करते टाइम आप लोगों को क्या याद रखना है. बायबैक सॉल्व करते टाइम कि सीआरआर इसमें भी मेंटेन होगा. रिडम्पशन वर्ड इज फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक के लिए जो वर्ड है वो इक्विटी शेयर्स के लिए. तो चलो स्टार्ट विद बायबैक कॉन्सेप्ट. पीपीटी में कुछ तो गड़बड़ होती है. चालू ना होते. एक ही मिनट बेटा. एक ही मिनट. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है लैपटॉप में. एक ही मिनट रुको. Those students who have already cleared their exams, beta, for them, yes, congratulations. Okay, हो गया.
सो कॉन्सेप्ट 1 से शुरू कर रहे हैं. मीनिंग, buyback of share means purchasing of its own shares by company. Buyback का मीनिंग क्या होता है बेटा? Purchase of its own shares by a company. तो याद रखना है बायबैक का मतलब इज वेरी सिंपल. इट इज अ परचेसिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी. मींस यू आर गोइंग टू, हाँ, बायबैक. When shares are bought back, they have to be cancelled by the company. A company cannot buy back its shares for investment purpose. It's very simple. Investment purpose के लिए नहीं करना है. What is the benefit? Your number of shares will get decreased, and if your number of shares will get decreased, it means your earning per share are increasing. For example, previously you are earning 5 lakhs and there are 1 lakh shares. So 5 lakhs divided by 1 lakh. So 5 rupees per share. But now beta 5 lakhs rupees ही earning है. But now 50,000 buyback हो गए. 50,000 shares are only remaining. Number of shares, how much remaining, beta? That is the clause. But just for your concept clarity, now only 50,000 shares are remaining. In that case, earning per share will be rupees 10 per share. So EPS got increases. Okay, sir. To increase the promoters holding, to discourage the any hostile takeovers, to pay surplus cash to the shareholders when business needs it. Provisions under section 68, 69, 70. Buyback of own shares and other securities can be paid out of free reserves. Then you have security premium account, and then you have proceeds of issue of any shares or other specified securities. Remember, proceeds of issue of any shares or other securities means you can issue preferences. You remember that redemption of preference shares के लिए how you maintain your capital structure. You have maintained your capital structure by 2 ways. One is CRR and second one क्या था? एक था CRR और दूसरा था बेटा आपका, यस याद करो, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए. तो बायबैक इक्विटी शेयर्स का होता है, तो यू कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स. आप क्या इशू कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर्स. सो रिमेंबर, यू हैव टू मेंटेन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो फ्री रिजर्व्स में से देना है और सिक्योरिटी प्रीमियम में से देना है. बहुत सिंपल है सर. देन company shall purchase its own shares only and only if it is authorized by articles. ये law provisions है. Second one is that special resolution, you have to pass it in the general meeting. आपको special resolution pass करने की जरूरत है, ये याद रखो. special resolutions के बाद एक्सेप्ट, यस, 10% का बायबैक होगा. दिस इज कंपनी लॉ प्रोविजन. यदि 10% का बायबैक होगा कि द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% का, तो यू डोंट हैव टू मेंटेन, आस्क फॉर AGM. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन पास दिस मीटिंग में रिजोल्यूशन. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसको पास कर सकते हैं 10% के लिए. पर 10% से एक्स्ट्रा होएगा तो बायबैक की प्रोसेस को AGM बुलानी पड़ेगी. EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या AGM में. Then buyback is equal to or less than 25% of paid up capital plus free reserves. Paid up capital plus free reserves के लिए buyback हो सकता है. So पहला criteria समझ में आया. याद रखना, what is the limit? Limit is given in the question. 25%, 25% ये आपका buyback होना चाहिए. Next. %25 of paid up capital plus free resource. या MP है. स्क्रीनशॉट नंबर 1 च्या दिशेने चाललोय आपण. येस, स्क्रीनशॉट नंबर 1 इज फर्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज, हाँ जी, डेट ऑफ सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड आफ्टर बायबैक डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. तो ये जो है ना, ये आपका यस लेस मोर देन और लेस देन 2 होना चाहिए. ये ध्यान में रखिए. और उसके बाद ऑल शेयर्स फॉर बायबैक आर मस्ट बी फुल्ली पेड. आपके जितने भी शेयर्स है ये फुल्ली पेड होने चाहिए बायबैक के लिए. तो ये था कुछ प्रोविजंस अंडर कंपनी लॉ. तो आपको, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट्स बेटा बायबैक की प्रोविजंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए. ये न्यू कोर्स में भी ये टॉपिक है, तो कोई भी इसको ऑप्शन में नहीं छोड़ेगा. It is authorized by articles. Special resolution has to be passed in the general meeting. Except 10% का resolutions, buyback is a 25%. Debt equity ratio has to be maintained. All shares must be fully paid. Yes. बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया है. I hope you will take a screenshot. Wait. Screenshot के लिए wait करिए.
ले लीजिए स्क्रीनशॉट नंबर 1। स्क्रीनशॉट नंबर 2 पे आते हैं। Buyback must be completed within 12 months after passing a special resolution. Special resolution 21/5 को पास किया. So suppose it is on 21st May, then you have to completion of the buyback 15 May होगा. मतलब within 12 months, that is before 12 months means 21st May 2021. 12 महीने के अंदर. After completion of the buyback, you have to file the returns. तो ये कुछ इतना जरूरी नहीं है. Ways of buyback from existing shareholders, from open market or from employees. You can do the buyback. Next one, when complete buyback, it shall not make further same kind of shares. So you cannot issue again equity shares within 12 months. Sorry, 6 months. Sorry, so within 6 months, conversion भी नहीं, conversion हो सकता है और ऐसे shares मत लाना. नो कंपनी शैल इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली पास, ये भी याद रखो. थ्रू सब्सिडरी कंपनी थ्रू नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना के नहीं कर सकते बायबैक, एंड डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. सो ये भी आईएमपीए, यू शुड नॉट मेक एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स. यस. Now CRR, what is capital redemption reserve? You have to maintain your capital redemption reserve, nominal value of shares. So it's same like redemption of preference shares. तो ग्रुप 1 में आपने ऑलरेडी कर दिया है. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसी के जैसा है, इशूइंग बोनस शेयर्स. तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट 2. जितना ग्रुप 1 में किया हुआ था, फेस वैल्यू जितना है उतना सीआरआर में ट्रांसफर करियो और बोनस शेयर्स के लिए ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज करना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थ्योरी इन दिस टॉपिक. व्हाई? इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज यू ऑलरेडी कवर्ड दिस इन योर सीआरआर फर्स्ट ग्रुप के इसमें ट्रांसफर टू सीआरआर. चलिए, journal entries, CRR account debit to bonus to equity shareholders, bonus to equity shareholders account debit to equity share capital when you are utilizing it. So you already know these entries. CRR की screenshot number 3. CRR account debit to bonus to equity shareholders. CRR is debited means you are using CRR. CRR को use करना मतलब utilize करना होता है, और CRR को utilize करेंगे to bonus to equity shareholders, and bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. It's very simple. It's very simple, sir. एकदम easy है sir. एकदम easy है. Okay, sir. I got it. CRR to bonus to equity shareholders and bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. Yes. Let's look at the journal entries of the buyback. Buyback के entries क्या है? Equity shares bought back account debit means equity share bought back करना, मतलब equity share capital को कम करना. Which value? Yes, cancel किया. Cancel किया equity share capital. ऊपर का पैसा आपको देना है. Face value cancel हुआ. Premium payable on buyback. Premium payable on buyback to equity shareholders, to equity shares buyback. Yes, it's a temporary account. It's a loss or it's a temporary account. Tempo. Payment, equity shares buyback account debit to bank. जोर जोर से बोलना है बेटा. इक्विटी शेयर कैपिटल डे कैंसल किया, डेबिट किया. प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक लॉस है टू इक्विटी शेयर्स बायबैक टेम्पररी अकाउंट. इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, बायबैक कैंसल. बायबैक कैंसल. हेलो. यस, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक. स्क्रीनशॉट नंबर ले लिया क्या बेटा?
4. And equity shares bought back is a temporary account cancelled. The bank goes out. Okay. Over, sir. Over. Premium cancel होगा तो security premium account or P&L account, if balance is not there. Here you can use security premium. Redemption of preference shares में you cannot use security premium, but here you can use security premium. Remember, so security premium account debit to premium on buyback and free reserves account debit to CRR. Create CRR. फ्री रिजर्व्स च्या डेबिटला टू सीआरआर. चलो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट देंगे, P&L को डेबिट दे सकते हैं, नहीं होगा बैलेंस तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक कैंसल हो गया. फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. एंड लास्ट एंट्री सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. टू P&L मतलब प्रॉफिट. ये लॉस होएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कभी कभी आपको बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ती है. सो यू हैव टू सेल योर इन्वेस्टमेंट. चलिए, सो ये हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. चलो एंट्रीज को याद कर लो फटाफट. एंट्रीज को याद कर लो. एक बार कमेंट सेक्शन में सभी एंट्रीज लिख के भेजो. चलो 5 मिनट देता हूँ एंट्रीज याद करने. एवरीवन हैज टू राइट दिस. इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. चलो फटाफट किधर तो रफ पेज पे लिखो और कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेजो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ESC लिखना. प्रीमियम पेबल पूरा मत लिखना. पीपी ऑन बायबैक PPOB लिखना. टू इक्विटी शेयर्स बॉट बैक इज टू ESB लिखो. ESC एंड ESB. सो आई विल अंडरस्टैंड. ESB अकाउंट डेबिट टू बैंक. नेक्स्ट एंट्री फिर क्या होगी? यस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑब्लिक P&L अकाउंट SP ऑब्लिक P&L टू POB प्रीमियम ऑन बायबैक. फ्री रिजर्व्स टू CRR, FR टू CRR. पूरा मत लिखिए कमेंट सेक्शन में, पर एंट्रीज लिखना जरूरी है. जो एंट्री नहीं लिखेगा बेटा वांदा आपका ही है. चलो एंट्री लिखो कमेंट सेक्शन में. फटाफट एंट्री लिखना है, फटाफट. चलो याद करो एंट्रीज. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले कैपिटल कैंसिल होएगा. प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. टू इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. इक्विटी शेयर्स बॉट बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक. टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे एंट्रीज लिखो फटाफट.
Write it in the comment section यार, फटाफट लिखो. I'm waiting for your answers. All entries you have to write it. Very good, Harshit. Equity shares bought back. Equity shares bought back to bank. Security premium account debit to premium payable on buyback. Very good. Free resource to CRR. Bank to P&L. Bank P&L to investment to. Yes, very good. And free resource to CRR रह गया था entry. चलो जल्दी से बृंदा entries लिखिए. Very good. Only you have written one entry. You have to write all 5 entries, na? First write it in your pages. Rough pages पे लिखो entries and then write it in comment section. चलो बेटा, बस हो गया, बहुत टाइम दे दिया. Yes, now everyone has clear with all the concepts. Yes, I hope everyone is ready for now action part. So entries are very simple. Entries are very simple. आप लोगों को एक ही याद रखना है कि entries जो है वो आपको इक्विटी शेयर्स बॉट बैक अकाउंट डेबिट एक बार वापस से याद करो. सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. उसके बाद इक्विटी शेयर्स बॉट बैक अकाउंट डेबिट बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑब्लिक अकाउंट प्रीमियम ऑन पेबल ऑन बाय बैक के बाद आपने एंट्री किया जनरल. चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्शन पार्ट. आज शुरू करते हैं एक्शन पार्ट. यस, ओपन योर स्टडी मटेरियल्स. स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए. नाउ सम प्रोविजन आई विल टीच यू फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग वन क्वेश्चन. इलू 6 पे आ जाइए. इलू 6.
ये क्या हो गया? ओके, इलू 6 पे आइए बेटा। आईएमपी इलस्ट्रेशन छे। इलू 6 आईएमपी इलस्ट्रेशन है। एग्जाम फेवरेट क्वेश्चंस 10 मार्क, 8 मार्क, 8 मार्क्स। So I will teach you buyback provisions from question itself. Okay? हम लोग क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो पैरेटो लिमिटेड, a non-listed company, Pareto Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March 2001. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल 330। इक्विटी शेयर कैपिटल है 330। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व एंड लोन फंड्स। The shareholders of Pareto Limited, on a recommendation of the board of directors, have approved 12 September का proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares, considering the large surplus available at the disposal of the company. The prevailing market price is ₹25 per share, and in order to induce the existing shareholders to offer their buyback, it was decided 20% over market. But obvious, if you are giving market price से extra something, भाई सिंपल है ना, मार्केट में 500 रुपए में शेयर मिल रहा है तो मैं मार्केट में से उठाऊंगा ना, 500 में लेना है तो। सो कंपनी शुड गिव 600 का बायबैक का प्राइस। सो कंपनी शुड गिव ऑलवेज हायर अमाउंट ऑफ बायबैक देन द मार्केट प्राइस। ओके, यू गॉट द कॉन्सेप्ट। कंपनी ने क्या करना चाहिए, चलो जल्दी से याद करो, मार्केट से प्राइस ज्यादा देनी चाहिए तो बायबैक प्राइस ऑफर सक्सेस होगा। एंड इन दैट केस इट हैज टू inform that infrastructure development reserve is created under income tax act। मतलब ये not a free reserve, not free reserve। You are required to calculate the number of shares to be bought back, 1200, 1500। ये यदि situation for debt funds। Remember, loan funds has to be in the ratio of 2:1 after buyback। अभी ये क्या होता है, तो एक सबसे पहली प्रोविजन ध्यान में रखो। सबसे पहला प्रोविजन that, चलो सबसे, yes, write down बेटा। Number one, yes, test number one, test one, share outstanding test। Test number one, share outstanding test। Serial number, particulars, number of shares। See, first test is share outstanding test। Okay, Roman one, number of shares outstanding, number of shares outstanding, 330 rupees divided by 10, 33 crore shares। Roman 2, 25% into shares outstanding, 33
8.25 crores. 8.25 crores. So test 1 is very simple. Test 1 is share outstanding test. Number of shares outstanding is 33 crores into 25% is 8.25. Got the correct answer, beta? एकदम easy છે. Yes, easy છે. बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए कि दीक्षिता जी, why investment की entry? Because investment you have to sell, you want to get some money for buyback purpose, and that buyback purpose के लिए you have some investment, so you are giving it back. It's very simple. Okay. So share outstanding test हो चुका है. Share outstanding test is already over. Now second one. Second test. Second test is known as test number 2 is resource test. Is resource test. Test number 2 is resource test. Serial number. Now 25%. Now 25% rupees in crore. Please write it. Test 2 is resource test. Now resource test, what it talks about? What it talks about? It talks about, beta, Roman 1, paid up capital. Paid up capital. Yes, 25% of rupees में आएगा ये, and then we will convert into, now paid up capital is 330. Paid up capital is 330. Roman 2, free reserves. Free reserves. Very now. Very now. Free reserves plus security premium. Free reserves plus security premium. Don't consider plus security premium, though it is a specific reserve, but we consider it for the buyback purpose. So that's why I have written it by red pen. Red pen se likhne ka logic is very simple, because it's a security premium, though it is not a free reserve, but it is considered for the buyback purpose. Okay. So 240 plus 90 plus 90. 240 plus 90 plus 90. So you are getting the answer 420. Roman 3. It is called as shareholders fund. What is called as, beta? Shareholders fund. So your shareholders fund will be 750. It's very simple. Resource test. So payly test. Maximum buyback is allowed only 25% of the shares outstanding. So resource test, then beta shareholders fund you will calculate, and after calculating shareholders fund, only 25% is allowed of shareholders fund. કેટલો થયો રે? 750 का 25%, 187.5. And number 5, number of shares to be bought back. Roman 5 divided by 1 share कितने का है? ₹30 per share. Why ₹30 per share? Because buyback price per share 25 plus 20%. 30. So divided by 30 किया. So 6.25 maximum bought back is possible. 6.25. Yes. You can write 5 number पे buyback price per share, and you will get the number of shares to be bought back. Very simple. Simple check. Test number 3. Very, very important test. Debt equity ratio test.
Debt equity ratio test 2:1. 2:1. Serial number, particulars, situation 1, situation 2, situation 3. There are 3 situations. Now, loan funds. Now, see, beta, your loan funds are 1800, but different scenarios 1200 and 1500. Okay. So that's why we are taking 3 situations. So, but try to understand the format. Format, once you got, the problems are very simple. Okay. Serial number, particular situation 1, 2, 3. A. Loan funds. 1800, 1200, 1500. B. Minimum equity to be maintained A upon 2. A upon 2. Minimum equity to be maintained. Present equity shareholders fund. Present equity shareholders fund is given now, 750. We calculated. ना shareholders fund. देखो, हाँ जी, shareholders fund 750 છે. Okay, so present loan fund हुआ, minimum equity half, and present equity shareholder 750. And D, maximum permitted buyback. Not applicable. Not applicable. And here it's not possible. Now, first case mein 750 and 900 you have to maintain. Not possible. Either be not possible. And maintain B minus C minus CRR. Now this is working note 1. So working note 1 इधर आएगा. And E, maximum number of shares. हो गया. Format is over. Number of shares that can be bought back. That can be bought back is equal to D upon rupees 30 per share. D upon 30. Working note 1, maximum permitted buyback. Maximum permitted buyback. Available funds and minimum equity to be maintained. Available funds is 750, 150. 150 you have to divide it in rupees 30 and rupees 10 ratio. This is buyback, and CRR is always equal to face value. Simple. So 150 crores you can bought back, but buyback kitna possible hai? 150 divided by 40 into 30, 112.5. So 3:1 ratio में divide किया, and rupees 3.75. Sorry, ये क्या किया मैंने?
150 divided by 4 into 3 is equal to 1 is equal to 37.5 is CRR. Yes, very very important calculation. ये रेड पेन से लिख के रखना साइड में, वेरी इंपॉर्टेंट. VIMP. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ये देखो 750 था, 600, so 150 you have to divide it in the two ratio after maintaining CRR. So ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. Yes, any doubts तो you can ask me. Any doubt you can ask me. डाउट छे तो पूछ ही लो. यस. Okay. So allowed is rupees 112.5. $3.75 shares. And therefore, beta, now last part of this problem. Now you can see here. ये आप लोग चार्ट बना लो अभी. Yes. Share outstanding test में in all situation 8.25. Share outstanding test 8.25. Then 6.25. And then resource test के बाद debt equity ratio first case and third case not applicable, and therefore only situation 2 में 3.75 can be bought back. You can write entries: equity shares bought back to bank, equity share capital, security premium to equity shares bought back, और premium payable on bought back भी ले सकते हो, and general reserve to CRR. These are the entries. So just copy it down and format को याद करो. Yes, I am giving you one more problem to solve. TYK1. Exactly, I'm giving you 15 minutes. So पहले ये कॉपी करो. 15 मिनट्स के बाद रब पेजेस पे करना. Yes, रब पेजेस पे. And 15 minutes I'm giving you for buyback purpose. चलो, you have exactly 15 minutes. TYK1. बिना देखे सॉल्व करो. एक बार फॉर्मेट देख लो और फिर सॉल्व करो. चलो फास्ट, don't give up. 15 minutes you have to solve the question. It is not a break. ब्रेक नहीं है, ये आपको सॉल्विंग के लिए टाइम दिया गया है.
Yes, beta. What is the answer? Answer is 120, 30, resource test 30, then this is 24 crores. And last answer is situation 1, situation 2. Maximum permitted buyback is 320 CRR and 960. ये आया क्या देखो, चेक करो आंसर, आंसर चेक करो, चलो बताओ। यस बेटा, चेक करो। यस, व्हाट इज द आंसर? वर्षा, 2:1 is very simple. 2:1 का रेशियो है। Yes, whether you are getting the same answer. वृंदा, कैलकुलेशन क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? इट्स वेरी सिंपल। यस, कैलकुलेशन बोलो। हो गया क्या बेटा? यस। चलो, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक, इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या आप लोगों को? व्हाट इज द एंट्री? अरे हाँ या ना? डेट इक्विटी रेशियो प्लीज बोलो यार, जल्दी से बोलो कि सर अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। यस, नाउ इजी। माई 3 बैच शेड्यूल फॉर May 24। अभी ऐसे अपडेट कर देगा, डोंट वरी बेटा, जल्दी से जल्दी अपडेट कर देगा। बहुत बड़ी बैच होने वाली है ये, क्योंकि न्यू कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज मेनी चैप्टर्स आर एडेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भरा दिया है पूरा, और मुझे लगता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे से करने वाले। यस, नो डाउट्स बेटा, नो डाउट्स। बोलिए बेटा जल्दी से, डाउट्स है क्या नथी? डाउट्स है क्या नथी? बोलो बोलो बोलो। चलो, बहुत बढ़िया। नहीं है डाउट्स तो वी आर गोइंग टू। सो हाउ मेनी टेस्ट आर देयर? देयर आर 25% के 3 टेस्ट। कितना टेस्ट है बेटा? 3 टेस्ट है। एकदम इजी है। चलो इलू 1 पे आ जाते हैं, एक इलू कर लेते हैं, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं। ओके, इलू 1 पे आ जाइए। इलू 1 पे आइए, इलू 1।
M Limited furnishes the following balance sheet as on 31st March 2001. Share capital, reserves surplus, long-term borrowing, trade payable, non-current assets, property, plant and equipment, non-current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. Share capital, reserves surplus, long-term borrowings. The company was to buy back 20% of its equity share capital at rupees 15 per share, and investment is sold for 30 lakhs for 25 lakhs. Investment कितने की बेच दी? 25 lakhs में. देखो एंट्रीज आर वेरी सिंपल. चलो एक बार एंट्रीज भी लिख लेते हैं. So write down. और बैलेंस शीट यू हैव टू डू बाय योर ओन, बट जस्ट आई विल टेल यू कि कैसे अपडेट करना है, बिकॉज दिस इज आई एम नॉट गोइंग टू टेक द बैलेंस शीट इन डिटेल, बिकॉज वी ऑलरेडी कवर्ड इन दी ग्रुप 1 अकाउंट्स के बैलेंस शीट को अपडेट कैसे किया जाता है. तो जितने भी संकेत सर के स्टूडेंट्स है, यू आर ऑलरेडी अवेयर. आई विल शो यू कि बैलेंस शीट अपडेट कैसे करनी है एंड हाउ टू गेट द आंसर. तो चलो सबसे पहले लिखो जर्नल एंट्रीज. अच्छा रफ पेज पे लिखो, रफ पेज पे लिखो. So how many tests are there, beta? 3 tests. First test is if nothing is given, तो first test क्या होगी बेटा? First test होने वाली आपकी share outstanding test. एकदम easy छे. Okay. ठीक छे. First test is resource test होगा दूसरा and debt equity ratio test होगा तीसरा. चलो सबसे पहले एंट्रीज लिखो. मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, जस्ट रफ में लिख रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी लॉस छे. टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. second entry, equity share capital account debit, 20% ना. सो 3000 का 20%, 600. 600. Premium on buyback, 300. To equity shares bought back. अच्छा क्यों 300? तो इट्स वेरी सिंपल. Buyback is rupees 15 per share. 900. तीसरा एंट्री, इक्विटी शेयर्स बॉट बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक. फोर्थ एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक. प्रीमियम ऑन बायबैक 300. डॉक्टर वैसे. And last entry is revenue reserve account debit. To CRR. So write down all these entries बेटा, फटाफट लिखिए. Yes, got these entries beta. Now update your balance sheet. How to make it updated?
बँकेच्या डेबिटला बैंक के डेबिट में चलो पहली एंट्री कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2500 ऐड करेंगे. लॉस लॉस P&L में से 500 माइनस एंड इन्वेस्टमेंट 3000 माइनस. ठीक है. प्रीमियम एंड बॉडबैक इज टेम्पररी अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल में से 600 जाएगा. सिक्योरिटी बैंक में से 900 जाएगा. बैंक में से 900, यस करेक्ट. बैंक में से मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंट्री बाय एंट्री देखना है. एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में से 300 जाएगा. रेवेन्यू रिजर्व टू CRR और ये सेम ही रहेगा. सो 4400 and 600 plus 10 5510 4400 5510 debentures 400 2750. टैली हो रहा है क्या देखें. दिस इज 2000 1000 2000 और ये कितना आएगा 3500 माइनस 900 इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो 2600. Yes. 10,350. You can check the answer. No, it is not asked actually, but it is tallied at 10,350. You can check your answer. It is tallied at 10,350. Just update your balance sheet. Similar question, redemption of preference shares जैसा. So it is expected that you can solve it. Update your balance sheet and get the answer. Okay? चलो एक काम करते हैं. Yes. प्रीमियम पेएबल के बदले में यस नो बेटा पृथ्वी यू कैन राइट डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम. दिस इज ओनली द फ्लो. इफ यू डायरेक्टली राइट द सिक्योरिटी प्रीमियम इट डजंट मैटर. ओके इफ यू डोंट वांट टू ओपन प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक इट्स ओके बेटा पृथ्वी जी. ओके सो नो नीड टू ओपन यस प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक. और कुछ डाउट्स है. और कुछ डाउट्स. व्हाट वी हैव कवर्ड शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. यस बेटा विदाउट ब्रेक मैं आपको जल्दी छोड़ दूं क्या. इफ यू आर ऑल रेडी तो इफ यू से कि नो सर नो नीड ऑफ ब्रेक लीव अर्ली तो हम लोग इलू 2 भी सॉल्व कर लेते हैं. इलू 2 भी सॉल्व कर लेंगे. इलू 2 इलू 3 इलू 3 इज योर होमवर्क. इलू 3 सिमिलर टू इलू 1. इलू 4 अच्छा क्वेश्चन है. You try it at today and in next session we'll take इलू 4 and 5 तो बहुत इजी है. So 2 ट्राई करना है. If you are all ready, you want break or should I continue? आप लोग जैसा बोलोगे. नो नीड ऑफ ब्रेक कविता बोल रही है. अदर स्टूडेंट्स
इलू 2 लेके छोड़ देता हूँ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर। ओके, इलू 2 एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस एक प्रॉब्लम हम लोग पूरा टाइम लगा के सॉल्व करते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम हम लोग पूरा टाइम लगा के सॉल्व करते हैं। इलू 2 विथ टाइमर, इज इट ओके? विथ टाइमर, पूरा पूरा अप टू बैलेंस शीट, 20 मिनट का लेक्चर विदाउट ब्रेक। चिन्मय इज आस्किंग ओनली, बड़ा ठीक है, एक 850 को छोड़ दूंगा आपको आज, बस ब्रेक नहीं देता हूँ। आज के कॉन्सेप्ट्स हेवी नहीं है, सो आज जल्दी हो जाएगा। फिर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यस आई हैव वन मोर सेशन, तो उसमें भी मेरा जल्दी होने वाला है। सो लास्ट सेशन रहेगा वो। आपके डाउट्स कुछ भी रहेंगे तो मुझे पूछ लेना। सो 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं विदाउट ब्रेकफास्ट। ओके, दिव्या बोले। यस, चलो। Anu Limited, a non-listed company, furnishes to the following with the balance sheet as on 31st March. देखिए ये सब दिया हुआ है। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, सब कुछ सेम है। सो टाइमिंग 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 स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, ओके, चलो इलस्ट्रेशन 2। बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सीरियल नंबर 1, 12% preference share capital account debit. They ask you to redeem preference shares also. 75. To preference shareholder. Second one, preference shareholder account debit to bank. 75. Third one, equity share capital account debit. How much equity shares bought back, beta? 50 lakhs. 50 lakhs means 0.5 crores. 0.5 crores. 50 lakhs means 0.5 crores. Rupees in crores hai. So 0.5 into 50 rupees. 10 rupees. Sorry, buyback price nahi hai. 5. Directly you can write security premium. Huh? Or you can write premium payable on buyback, and then this is also correct way. Don't worry. 40 rupees. 2 shares bought back. 25. Fourth entry. Equity shares bought back to bank. 25. Revenue reserve to CRR.
75 and 5 80 रुपीज का बॉड बैक करना है। प्रेफरेंस होल्डर टेम्पररी अकाउंट, बॉड बैक टेम्पररी अकाउंट। 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 75 माइनस बैंक में से 75 माइनस देन इक्विटी शेयर कैपिटल 5 20 25 revenue reserve to CRR 80 CRR 80 this is 20 beta, this is CRR 80 15 5 260 20 260 trade payable as it is 40 property plant and equipment nothing 100 140 and this is 100 340 अरे यार ये गलत हो गया 180 है ये 260 माइनस 80 180 180 है तो ये 280 हो जाएगा। हाँ जी 280 है, इस गलत हुआ ये 280 है 340 से टैली 340 से टैली इट्स वेरी सिंपल। चलो राइट डाउन बैलेंस शीट ऑफ अनु लिमिटेड सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज इन करोड़ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। चलो ड्रॉ करो एक पेज का फॉर्मेट फटाफट। चलो ड्रॉन शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल reserves and surplus current liabilities trade payable टोटल जितना है उतना ले लेता हूं टोटल के बाद टू एसेट्स नॉन करंट एसेट्स पीपीई
B, non-current investment. 2, current assets. Trade receivable. Cash and cash equivalent. Notes. Share capital. Particulars rupees. Authorized. Authorized share capital. Issued. Subscribed. And paid up capital. 200 lakhs. Equity shares of rupees 10 each. Reserve surplus. CRR 80. Capital reserve 15. Security premium 5. And revenue reserve 180. PP 100 minus 100. Investment 100. 100. Share capital 20. 280. 40. 100. 140. And you can give breakup of cash also. Cash का breakup दे सकते हो आप लोग. 100. 200 minus 75 minus 25. Over. Tallies at 340. 340. 11 minutes 17 seconds. ओवर बेटा. होमवर्क में 4 नंबर ट्राई करो आज. होमवर्क में 4 नंबर ट्राई करो. 5 ट्राई करो. अभी नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट. यस. वर्षा 2:1 रेशियो जो है ना 2/1 मुझे समझ में नहीं आ रहा है. वर्षा यू आर आस्किंग इट फ्रॉम. ठीक है चलो. Varsha ji, 2:1 is a debt equity ratio. So if your debt is 1,800, your equity you have to maintain 900. Half. 2:1. If 1,200 is a day loan, so 600 is a equity. 1,500 is a loan. 750 will be equity. 2:1. Half. तो दो डेट होगा तो हाफ इक्विटी होगा. 2 में 1 रुपया. You have to maintain it. It's very simple. I hope you understood it. ठीक है. आज का सेशन हम लोग यहाँ पे रुकवाते हैं. यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ लीजिए बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू ऑन दी नेक्स्ट डे ऑल्सो. तो थर्सडे को मैंने एक्स्ट्रा सेशन लिया था. इफ यू आर एनी क्वेरी रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप मुझे परसों बता देना क्योंकि परसों का सेशन भी 1.5 आवर में खत्म हो जाएगा. सो सपोज इफ यू हैव क्वेरी एंड आई विल गिव यू प्लान ऑन थर्सडे को मैं आपको प्लान भी दे दूंगा. सो हाउ टू प्रिपेयर इट. यस. यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन तो जल्दी से मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको. क्वेश्चंस फटाफट बोल दीजिए. बैलेंस शीट मेरी हो चुकी है. 12 मिनट में होना चाहिए आपका. 12 मिनट.
अरे बोलिए बेटा, कुछ तो बोलिए। ठीक है मनीष जी, सेशन को कंप्लीट कर दीजिए आज, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। यस, थैंक यू।